I feel I'm bringing up a really fantastic man in making. आप अपने पार्टनर को एक लेवल पे लेके जाते हो. When I really appreciate those ladies. Or did you learn to rely on yourself? Right. एक टाइम पे जब आप किसी जगह पे नहीं होते हो तो कोई और आपकी जो the most valuable asset of your life उसका कोई ख्याल रख रहा होता है. I mean, I really salute and I really admire those men who has not given up those responsibilities. And ऐसा हो रहा है. According to me, of course, I'm nobody to say, but जैसे उसने मुझे बोला कि I know you will do it. Some women don't ask life to be easy. They simply learn how to carry more. Today's guest is a mother, a dreamer, and a woman who chose courage even when the path ahead was uncertain. Her journey reflects the quiet strength so many women live with, showing up, holding everything together, and still finding the power to build something of their own. She reminds us that inner strength isn't always loud. Sometimes it looks like love, patience, and not giving up on yourself. We are truly grateful to have her with us today. So, Pallavi ji, thank you so much for joining this podcast for Women's Day Special. So, can you tell us about your journey? Thank you, Karishma, for having me here firstly. Thank you so much. Talking about myself, I'll start from the beginning. Yes. So I'm born and brought up in Amravati. I had a wonderful childhood, I would say. And I was always good in designing or imagination. That's why I pursued architecture firstly. And then design took me towards product design, industrial design. I studied from SPA Delhi. And my career started with a brand like Honda, Hero Honda, And from there, I lived in Delhi for a while, and marriage took me from Delhi to Mumbai. Okay. So then as a professional, I was really, really lucky, I would say, to work with the best brands so far, and great career opportunities I have got. I've worked with brands like Starbucks, Victoria's Secret, La Senza, Gas, Gap, or Godrej in innovation space, and then lately with Colgate Palmolive. And as a designer, you always, I guess every designer has this dream of starting on its own or having your own studio or your own space, And the same, even I also had that vision, had that thinking with me. However, there was a time where me and my ex, ex-husband, we were at a space where a decision had to be made that who will start first, because he also wanted to start his own venture, his own startup, his own dream. And we as women, we give that priority or that, Right. So I decided to fuel his dream. I decided to fulfill his dream first and then mine. So we did that for continuously 5 years. I had that perseverance. During this time, actually, we had a baby. And by the time this dream of his, this venture of his started bearing fruits, he walked out on us. Oh my God. That's where my struggle or my challenging or the roller coaster ride started. Right. So you just mentioned that you shifted from Delhi to Mumbai. Yes. How easy it was? Was it any difficult? What is the life style you had in Delhi or what you have in Mumbai? Because Mumbai is very fast moving city, right? So is there any difference or how did you adjust? Oh, yeah, Delhi is a capital, so it's Right. Delhi and Gurgaon has the same spirit like Mumbai. Mumbai, right. The only difference for me was I was a single person there.
carefree, careless. And here I was, along with as a professional, I was a wife as well. So that's the only difference, that you are moving from a single life to a family life, and trying to take more roles, more responsibilities that way. Right. So, Pallavi ji, I don't want to know what happened between you and your husband, okay? But a lot of women have that problems, may or may not have that problem. So, how did you overcome that problem? And was it any difficult for you to come out of that situation? How did you handle that situation? See, when you say asking, handling about the situation, when you become a mother, you have already signed up for whatever comes on your way. Right. I would say, did I have a choice? No. No. You never have a Definitely. choice. My always, whenever I have this discussion with my friends, or generally, candidly, when we have this discussion, I always ask this, that one thing I feel that, have you ever heard that a mother walking out on her family, or mother walking out from her own baby? No. Never. And why this, even today, when we talk about so many things about empowerment, about about equality, and about everything. I mean, we are evolving as human race. Right. We are evolving, and still the basic things, like, I mean, giving up your responsibility of your own flesh and blood. I still don't understand this. So yes, I never had a choice. And I did not crib for that, because the moment I had conceived the baby, I had taken that responsibility, that whether someone is going to help me out with this or not, I have to take care of my own, So that kept me going. And honestly, my baby, my son, he kept me going. So, how old was your son then? When He that was happened? 11 months. 11 months. Oh God. And how old is he now? He's 8. He's 8. Yes. So कभी ऐसा सिचुएशन आया जैसे स्कूल में होता है ना कि बिकॉज यू आर अ सिंगल मदर ऑफ सन, बहुत ऐसे सवाल आते हैं कि वेयर इज़ योर फादर, व्हाट डज योर फादर डू, हाउ इज़ ही डीलिंग विद सच सिचुएशंस एंड व्हाट डिड यू टीच हिम? Now, this is very interesting question, because the moment, since he was 11 months, then there was time for the schooling and everything. But I had decided, and I have told myself, that I'm not going to use his name, and that's why I changed his name from the typical father's Father name to, I gave him my name. Your name. So Yuvan Pallavi Lande. Okay. Should I be mentioning Yuvan Pallavi Lande? So now, because of this, that's a highlighting or a thing for any general people. Whoever will read would say, would call out his name, would realize ki, okay, why is he using a mother's name? And I had decided then, when we separated, that if you're not there in the game, you're not part of anything then. Right. So that's how I changed. And till now, he has never questioned me, because I think he has watched me throughout all this. He has watched me the way we both are, Right. and we have a very, what do we say? We have a very strong bond with each other. And during his young age, my son's young age, we have faced even many other challenges, rather than just living alone, like COVID. Right. That was the time when he was very little, just 2.5 and all. And we have survived COVID together. And I guess he is born and brought up watching me taking a different route than a conventional one. And he is more matured than what he should be. Right. And here about asking about his father and all, yes, nowadays, very recently now, he is having those questions or those queries, and I'm trying my best to give him the right answer, which doesn't scar him, or Right. which doesn't affect his innocence, his so yes.
So, Pallavi, you supported his dream first, your husband, and when he left after becoming successful, how did you process that emotionally without letting it define you? जब ये सब हुआ ना, I had already poured in all my finances into his venture. So उस दौरान जब actually when he left for real, जब मैंने अपने बैंक बैलेंसेस चेक किए, you won't imagine, I just had 60,000 in my bank balance just, and a baby with me. So that was a really, you feel like zooming out from everything. I had this feeling that okay, what am I going to do with this? Because I very precisely remember his statement when I said that, okay, I mean, why are you leaving, or why you're doing this to us, and how am I going to manage? मैं क्या करूँगी? So he said कि I know Pallavi, you will do it. So that still resonates in my mind, that he also has that confidence in me that okay, जा तू कर लेगी. कर लेगी, हाँ? right. So then yes, like I said before also, you never have a choice. Once you have signed up for something, you're signed up for something. And I also believe that once you say something, you have to abide by it. Right. That's one of my principle. So that's there. So with that basic thing, yes, by God's grace, my parents, I come from a good family. So financially, I mean, had it been, मैं रास्ते पे भी अगर रोड पे भी आ जाती थी, तो भी ऐसा नहीं था कि कैसे क्या करेंगे. My parents, हाँ, मेरे मम्मी पापा है, वो उस दौरान भी थे, उनका बहुत सपोर्ट हुआ है. बट मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि एटलीस्ट फॉर पैसों के लिए, इमोशनल सपोर्ट और बाकी सारा सपोर्ट तो उन्होंने ट्रेमेंडसली दे हैव सपोर्टेड मी, बट मैंने ये डिसाइड किया था कि एटलीस्ट पैसों के लिए नाउ, इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, या इतना, यानी माय डैड नेवर स्टॉप मी एनीवेयर कि ये मत करना, वो मत करना. he just gave me a free hand while I was studying and everything. So after giving me that level, मैं वापस पापा के पास ये नहीं जाने वाली हूँ कि मैं पैसा लूँगी आपसे. So वो मैंने डिसाइड किया था. So by hook or crook, let's see. So I worked for a while and then decided, okay, abhi it's a right time, or it will be too late to start on your own then. So this is what it is. Right. So, do you feel women often invest deeply in building others but rarely acknowledged for it? You know what? Women are always, by nature, we are designed in a way to give. Right. I guess you would also agree to that. And that's why that was a natural response from me. Ki, okay, we have to, and we as women, we enjoy others' success. We are not bogged down, or we are not jealous of your partner's success or his greatness. You don't even you take pride in that. Right. So that was the same case with me, Do you feel women often invest deeply in building others but rarely acknowledged Yes. for it? And in the entire process, then you actually end up forgetting your priority. You actually forget about yourself. आप भूल जाते हो कि आप भी हो उसमें, कि भी एग्जिस्टेंस है वहाँ पर. Right. वो शायद कहीं आप भूल जाते हो. मुझे हमेशा ऐसा लगता है, आई रियली अप्रिशिएट दोज लेडीज. उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो खुद पे काम करते हैं, सेल्फ लव, what we call nowadays. Right. I really admire that, and I'm still trying to incorporate and learn that, to incorporate that in my life as well. So yes. So आपने पल्लवी जी अभी एक मेंशन किया था कर लेंगे वाला जो एटीट्यूड है इंडिपेंडेंट वुमेन को लेके. आज की डेट में वो होता है ना कि अरे ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो कर लेगी, हाँ. ये तो संभाल लेगी, इसको किसी की ज़रूरत नहीं. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट, कि सच में इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि हाँ इसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है? आई वुड से, आई थिंक हमने वो जो पुरानी कहावत है ना, वो समझनी चाहिए कि आप अकेले आए हो,
अकेले जाओगे. जाओगे. So उन दौरान और I always feel that do we ask a man that how did you do it all by yourself? We Right. don't, We right? don't. Because we are conditioned that way. We feel, and that conditioning, that feeling is always given to you that you need someone, to thrive, to move ahead. So I feel yes, even मुझे भी ऐसा ही लगा था, या फिर मुझे भी सब लोग यही कहते थे, तू अकेले कैसे कर पाएगी, Right. या अच्छा तुम दोनों अकेले रहते हो, अकेले बच्चा संभालती हो, ऑल दिस क्वेश्चंस, तो दैट एक्चुअली इवन ये सवाल भी हमें मजबूर करता है सोचने के लिए कि अच्छा, आई मीन you try to interrogate yourself that really would you be able to do it? ये हो सकता है ना? It's all mind game. It's all that. I guess like we have come alone. I think every female should feel कि independent रहना ही अच्छा है. कभी भी हाँ, you always need, we are human beings. अकेले रहना is not something which we are. Our race is not living in solitude, But then taking your own decisions and at least having a financial independence, I would say, and having clarity of finances between you and your partner. मुझे ये लगता है ये 2-3 चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप क्या हो, विमेन एक्चुअली इमोशंस में ना अपना ही है, अपना ही घर है, अपनी ही कंपनी है, अपना ही हस्बैंड है, सोच के क्या होता है कि हमें सोचते हैं अपना ही तो है. आई मीन इसमें क्या तेरा क्या मेरा नाम लिखने की क्या ज़रूरत है. करेक्ट. ऐसा सोचते हैं, एंड देयर यू आर रॉन्ग. सो वेरी राइटली सेड पल्लवी कि अपना ही है, क्या तेरा क्या मेरा, ये बहुत जगह पे होता है, बहुत. आज भी मतलब इतना हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं उसके बाद भी ये चीज़ें हैं. सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज की डेट में मेन एंड वीमेन दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, एंड व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? किस वे में ये वीमेन के लिए खास करके बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में आप थोड़ा सा अगर बात करोगे. बिकॉज यू आर अ सिंगल मदर, सो आप डेफिनेटली आप खुद से सब चीज़ें हैंडल कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, तो फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? फाइनेंसेस मेन एज ए सुपर मोस्ट रोल प्ले करता है. in fact, while we were living together, I never realized that me drawing that salary home, my importance was just to that. For those 5 years of venture building, startup building, I was just meant for that. I did not realize. Today when I go back, और मैं जब सोचती हूँ कि बस वही था, क्या था, क्या था that kept us going. So yes, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उससे क्या होता है, आपको कभी वो डर आपके दिमाग में नहीं रहता है कि व्हाट इफ सब चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी. वो चीज़ कभी नहीं रहेगी अगर आप अपने फाइनेंसेस के टेकिंग केयर ऑफ योर फाइनेंसेस. व्हेन यू डू दैट, देन यू डोंट हैव दैट इनसिक्योरिटी. बिकॉज जब ये सब हुआ उसके बाद जो भी मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी मेरे क्लोज पीपल थे, उन लोगों ने मुझे पहले सवाल उल्टा ऐसा पूछा, मी बीइंग मी एज अ पर्सन, उन्होंने मुझे ऐसा पूछा कि तूने ये कैसे होने दिया, हाउ कुड यू लेट दैट हैपन, तूने कैसे क्या सारे फाइनेंसेस सारे दे दिए या हैंड ओवर कर दिए. हाउ, आई मीन नॉट यू मेड अ मिस्टेक, इन फैक्ट ऐसा था. So then I realized, oh really, I mean just trust and just emotions and love here, at least in this context, is not enough. True. So how did society reacted when that happened? Were they supportive throughout, या क्या reaction था उनका और कैसे tackle किया? Very complex question, because जो लोग आपके ज़्यादा क्लोज नहीं होते, या जो दोज हु डजंट हैव टू डू एनीथिंग विथ यू, जस्ट फ्रेंड्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे कोई बाकी कुछ ये नहीं होता है, दे विल सपोर्ट यू. और जो बाकी के लिए they'll actually they'll judge you.
Right. वो सोच और ये हमारा लाइक वी स्पोक अबाउट कंडीशनिंग, ये हमारा रेगुलर का है. पीपल विल लुक एट यू थ्रू अ लेंसेज कि शायद इसी ने कुछ किया होगा. इसी में कमी होगी. हाँ, इसी ने कुछ किया होगा या शायद इसी की गलती होगी. बिकॉज वॉट वी डू थ्रू आउट योर मैरिड लाइफ या व्हेन यू आर टुगेदर, आप क्या करते हो, आप अपने पार्टनर को एक लेवल पे लेके जाते हो. व्हेन एक यू नो लाइक यू क्रिएट अ पर्सनैलिटी, यू क्रिएट दैट थिंग अराउंड हिम, एंड पीपल नो कि ओह ही वॉज तो वेरी गुड, आई थिंक इसी ने कुछ ये किया होगा. एंड लाइक आई मीन वी नो हाउ इट इज़. आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट लोगों को ये दिखना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग कौन रहा है. Right. यू नो. So single motherhood is not just an emotional, it's also logistical, right? So what was the toughest day-to-day challenge for you as a mother? Managing those hours, you know, क्योंकि when you have a baby, एक बच्चे का it needs a spontaneous, a continuous, you have to keep a continuous eye on that one, whether he's crawling, whether he's, you know, he will fall, he'll chew something, he'll gulp in something. Right. You know, right from there to even once he starts growing up, he should not pick up कुछ गलत आदतें ना पिकअप करे. हम हमारी डेली लाइफ में हम लोग कुछ ऐसे शब्द यूज करते हैं जो वो ना उठा ले, यू नो. सो इट्स बिकॉज ही इज अ रिफ्लेक्शन. Correct. नाउ शुरू में जैसे लाइक यू आस्क्ड, शुरू में लोग बोलेंगे कि इसी की गलती थी. इवन अभी अगर बेटा भी बड़ा होने के बाद, इफ एट ऑल, टचवुड, आई फील आई एम ब्रिंगिंग अप अ रियली फंटास्टिक man in making, but if God forbid, if things didn't go well the way I had planned for him, सब क्या होने वाला है, will say इसकी वजह से ही हुआ, यानी I mean मैंने मतलब वो एक अलग प्रेशर होता है लाइफ में. हाँ है. करेक्ट. हाँ है. So that's always there, and it's like a challenge also. I mean ये तो mandate तो है ही. Every parent, हर एक पेरेंट्स का एक मैंडेट है कि हमें अच्छी परवरिश करनी है बच्चों की. बट अभी ये मेरे लिए चैलेंज है, यू नो. आई से कि लुक व्हाट एम आई गोना डू, वेट एंड वॉच. आई एम गोना मेक दिस परफेक्ट ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ माय चाइल्ड दैट पीपल विल से कि आई मीन यस, मान गए. Hope so. Of course, definitely. So did you face additional barriers as a single woman trying to rebuild professionally? Yes, very much. First, people actually, I won't say judge you, but क्या होता है, even in corporate life, it's like you have a workload, There's no excuse to it, you know, irrespective of any role or any place you take. Then there is something ना, ऐसा नहीं है कि okay, I mean बच्चा है तो फिर then you take some leniency. You can't, and as a professional also you shouldn't be. You should do justice to whatever you are doing. आप काम कर रहे हो तो you do full justice to that. आप parenthood कर रहे हो, आप full justice करो. तो having both together was definitely a challenge, definitely difficult, not that easy. But like I said, you don't have a choice. So were you able to ask for help or did you learn to rely on yourself? अकेले कुछ भी नहीं होता है. You really need hands. And thankfully मेरे parents and और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे I am blessed with so many good friends all through all walks of my life, जिन लोगों ने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया है एंड हैंड होल्डिंग की है. एंड आई मीन आई थिंक द एंटायर जर्नी वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, वॉज वेरी डिफ़िकल्ट रादर, वॉज वेरी डिफ़िकल्ट हैड इट बीन वो लोग नहीं रहते थे, मेरे दोस्त और मेरे पेरेंट्स एंड द हाउस हेल्प. Oh. हाँ, ऑफ कोर्स. आई मीन हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, बट उनकी वजह से आई मीन चीज़ें ये हो जाती है क्योंकि यू आर नॉट ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर. एक टाइम पे जब आप किसी जगह पे नहीं होते हो तो कोई और आपकी जो द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ योर लाइफ
उसका कोई ख्याल रख रहा होता है. So True. yes. Nice. So, Pallavi, while starting again, was fear louder or determination? करिश्मा बाय नेचर ना मैं बहुत ज़िद्दी हूँ. सो मैंने ये डिटरमाइन कर लिया था कि ओके मैं अभी यानी जैसे उसने मुझे बोला कि आई नो यू विल डू इट, तो मैंने भी अपने आप को मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी वॉज नॉट अ क्वेश्चन फॉर मी. वो डाउट नहीं था. हाँ, बस वो प्रोसेस was I mean difficult or challenging. बट मुझे करना है ये तो Right. था नहीं लिया था. तो था ही. So, today when you look at your company, what emotion is strongest? Pride, peace, or healing? I guess peace, because you feel okay finally. No, I won't say I'm successful. There are so many things yet to achieve. Right. बहुत कुछ बाकी है. अभी कुछ नहीं किया है, you know. In Correct. fact एक पहला कदम लिया है. बट वो एक सेंस ऑफ ये है कि जो इतने सालों से जो कदम लेना जो बाकी था वो आज लिया है. सो अभी सिर्फ अभी आगे चलना है. सो पीस इज देयर इन माई हार्ट राइट नाउ. Right. कि ओके चलो एटलीस्ट शुरू तो किया. ऑफ कोर्स, बिकॉज एक पॉडकास्ट में इनफैक्ट सेम चीज़ पे हमने बात की थी. उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि कब शुरू करना है ये कहाँ किसने डिसाइड किया हुआ है. राइट. सो यू कैन स्टार्ट वेन एवर यू वॉन्ट. स्टार्ट करना ज़रूरी है. कब कहाँ कैसे इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. सो स्ट्रॉन्ग women आर ऑफन अज्यूम्ड टू हैंडल एवरीथिंग. Did you feel people stopped checking on you because of that? Might be. To an extent, yes. Because you already have a personality, you know. People like जैसे मैंने बोला मैं ज़िद्दी हूँ. वैसे लोगों को एक अपनी personality जो लोग हमारे क्लोज रहते हैं उनको पता रहता है कि ये कैसी है. तो आई मीन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यू नो, फॉर दिस. सो ड्यूरिंग द कोविड टाइम, यू नो, सो we had to travel from Pune to my hometown, which is Amravati. It's a almost 700 kilometers odd 7 odd kilometers drive, and in COVID I think everybody remembers how Right, things yeah. are. और उस रोड के बीच में ना एक लोनार करके एक स्पेस आता है जहाँ पे मेरा एक वन ऑफ माय कलीग फ्रेंड, हम लोगों ने साथ में काम किया था, वो वहाँ रहता है. सो मैंने जस्ट आई वॉज ड्राइविंग अलोन एंड आई जस्ट डिसाइडेड ओके व्हाई नॉट जस्ट गिव हिम अ रिंग, अंडरस्टैंड वो यहाँ है या मुंबई में है, let me ask that. And then I called him up and he was in his farms at that moment, and he said come stop by here, take a break. And he didn't knew that I'm alone or something. He didn't knew that. Take a break, we are here with the family having fun time at the farms, come over. And then we had this lunch at the farms and good times and all. Then I left, and then we never spoke about. He never asked me, why are you in this entire COVID thing, what are you doing alone on these roads driving alone? उसने नहीं पूछा मुझे. And I left. And then उसके कुछ दिनों के बाद जब हमने फिर से फ़ोन पे बात की तो मैंने पूछा, अरे तूने ये भी नहीं पूछा मुझे कि तू पहुंची या नहीं पहुंची, डिड यू रीच सेफ, या तू अकेले क्यों ड्राइव कर रही है, अकेली कहाँ से निकली, ड्राइवर नहीं है, कोई नहीं है, Right. तेरा हस्बैंड कहाँ है, वो भी नहीं पूछा तूने. तो व्हाट डिड ही से, यू नो. मुझे लगा पल्लवी तू ऐसी ही है, तू निकल जाती है. मैंने ग्रांटेड लिया तुझे कि तू ये तेरे लिए नॉर्मल होगा. Right. मैंने सोचा ही नहीं कि बिकॉज ऑफ कोई चैलेंज है, कोई है नहीं, इसलिए तू अकेले जा रही है. मुझे ऐसा लगा ही नहीं. मुझे So he लगा assumed. सो दैट इज व्हाट पीपल लुक एट यू, यू नो, कि Right. अरे ये तो नॉर्मल होगा इसके लिए, करेक्ट. यू नो. सो कभी ऐसे फील हुआ पल्लवी दैट यू डिडंट हैव द लग्जरी टू ब्रेक डाउन? I actually broke down many times, but in silence, you know. So we don't have the luxury to break down, yes, in front of people. क्योंकि क्या होता है, अपने मम्मी पापा के सामने अगर आप ब्रेक हो जाओ तो उन्हें भी लगता है कि यू नो अब क्या होगा. सो वो नहीं हुआ.
और अपने बच्चे के सामने तो कभी नहीं, वो कर ही नहीं सकते. वी कांट अफोर्ड बिकॉज ये दिस किड्स आर ना, वो लोग इतना इमोशनल और इतना ज़्यादा सोचते हैं यार. हम सोच नहीं सकते ऐसा कि अरे मेरी मम्मा क्यों रो रही है या ऐसा क्या हुआ होगा, और हम उनको क्या समझा सकते हैं. Right. So yes, you can't break down in front of people, but then you have to gather yourself when you are alone. So yes. So Pallavi, your son has grown up watching you rebuild from the scratch, right? So what do you hope he understand about the journey? मुझे लगता है करिश्मा, आई मीन उसने तो एक ही लाइफ देखी है ना, उसने तो मुझे ही देखा है. उसने पैरेलली ऐसा कुछ और कॉम्बिनेशन जो नहीं देखा है कि समवन इज सपोर्टिंग और ये. Right. सो ही थिंक्स दैट दिस इज द वे हाउ इट इज. यही है तरीका जीने का, या यही है कि ओके मम्मा जाती है और मम्मा इज वर्किंग एंड आई हैव टू स्टे बैक और आई हैव टू. सो आई गेस मे बी एज ही ग्रोज अप, बड़ा होने के बाद शायद उसे उसके मायने पता चले, समझे. अभी फ़िलहाल तो उसे लगता है दिस इज़ द वे ऑफ लिविंग, यही है ज़िंदगी. Right. So क्या चेंज आया पल्लवी आपकी लाइफ में? 7 years बैक वाली पल्लवी कैसी थी और आज की पल्लवी कैसी है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा रैशनल सोचने लगी हूँ. Okay. थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने लगी हूँ. मेरा थोड़ा सा इमोशनल कोशंट जो है वो थोड़ा कम हो गया है. दैट इज़ ओवर पावर्ड बाय रैशनैलिटी. दिस इज़ व्हाट आई फील. एंड स्टिल आई वांट टू से, आई मीन यू कैन delete it or decide. The way, I mean, I always relate it to what a typical or a woman should be naturally. Emotions is a part of a woman, is always there. And what we are doing, we are changing the basic fundamentals of a woman here. I mean, having a strong woman, ये वो सारा बोलने के लिए बहुत अच्छा है. Right. But you are actually, forcibly you are putting her into a situation जहाँ पे वो खुद ऐसा बने कि she'll try to show herself strong, and then like when we say it's, I mean, men are from Mars and women are from Venus. Right. That's there. That's how the nature has designed us. Right. So the softer part is always part of a woman. But हम लोग अभी we are adapting a new thing. Right. So I mean, that's the need of the day. But it shouldn't be like that, is what I feel. We should nurture, we should cherish how a woman should be actually. So what is your take on women empowerment? Equality को लेके are we clear about this concept, or still society needs to learn in a better way? See, we have defined this many a times. Everyone has come forward and defined it in a different way, proved yourself in a different way. But लेकिन and slowly even the society भी धीरे धीरे अडेप्ट कर रही है. ऐसा ओवरनाइट तो सब कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बट मुझे ऐसा लगता है बार बार हम लोग सिंगल मदर बात कर रहे हैं. आपने सिंगल फादर के बारे में कभी सोचा है, कभी सुना है? आई मीन, ऐसा क्यों नहीं होता? ये सारे सवाल हम क्यों नहीं सोचते हैं? हम क्यों नहीं पूछते हैं? बिकॉज ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल मदर ही होते, सिंगल फादर भी होते हैं. उनके लिए भी शायद उनके लेवल पे अलग डिफिकल्टीज आती होंगी. राइट. But the ratio, I mean, I really salute and I really admire those men who has not given up those responsibilities, and they still, उन्होंने वो challenge लिया है कि मैं I'll be that single father. I'll take the responsibility. But ये जो ratio है ना, ये ratio बहुत imbalanced है. And again, so क्या है ना, कैसा हो रहा है according to me, of course I'm nobody to say, but the challenges or the nature of challenges are changing as we move ahead. But फिर भी when we say women empowerment and women liberation, वो सारा चीज़ वो हो ही नहीं पा रहा है. हम एक चीज़ encounter करते हैं, there is another thing right in front of us.
So I really hope that we crack this very soon. Definitely. So what message would you like to give to the society ये चेंज लाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा चेंज आ चुका है. पहले तो औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती थी, राइट. आज के डेट में अपॉर्चुनिटीज़ है. Yes. बाहर निकल के बहुत सारे लेडी ड्राइवर भी हमें रोड पे देखने मिलते हैं, विच इज़ अ ग्रेट Yes, थिंग. yes, yes. ऑटो रिक्शा तक चलाते हुए मैंने देखा हुआ है, बस चलाते हुए देखा है मैंने. तो इट्स अ रियली गुड चेंज we are getting into, right? So what is the one thing that you would like to give to the society that can change जो अभी फिर भी ज़रूरत है, जो अभी भी आज की डेट में हुआ नहीं है, जो हम लोग कर सकते हैं? हुआ नहीं है ऐसा नहीं बोल पाऊंगी, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ. वट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई वुड से कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट. राइट. You know, first ask yourself what you want. A woman should do that, really. I mean, we really deliberately end up messing it up at that point when you are traveling by plane. वो कहते हैं ना, first help yourself Self, correct. and then help your Others. fellow passengers. Right. That is what is very much required. कि आप पहले अपनी खुद की मदद करो. जब आप खुश रहोगे तो सब बाकी you'll be able to, आप सबको खुश रख पाओगे. और एक मिथ भी है which we all agree, but still हम ना we try to pursue that. हम उसको ही करने की गलती करते हैं कि हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं. That's true. Very well said. हाँ, so वो नहीं हो सकता. You कहीं cannot पे make कोई ना everyone कोई happy. हर्ट होगा, कोई ना कोई Correct. नाराज होगा, कोई ना किसी को नहीं अच्छा लगेगा, नहीं हो पाएगा. तो अल्टीमेटली आप एक चीज तो हम कर सकते हो, आप अपने आप को खुश रखो. बाकी अपने आप हो जाएंगे. Things will start falling in place. Right. So when you look back at your journey, what is that one thing you are proud of? First thing is I could actually nullify that kind of that doubt about me कि ये अब ये क्या करेगी या कैसे होगा. I'm still saying, I'm still getting there. I'm not reached or I'm not conquered yet. I'm still, but I have at least initiated. तो वो एक लगता है कि at least I'm really looking forward and I'm really proud that I am investing man in making. You know, I'm going to develop my child into that person that at least people around us will be proud of. Look, Right. what a wonderful job you have done. So that would be my achievement, I guess. I guess I answered your question rightly. Yeah, definitely. So to end this session, since we are doing a Women's Day special podcast, what message would you like to give all the women out there career-wise? आप कुछ Career-wise, okay. Career-wise, I guess first is follow your heart. You know, whatever, I mean, don't go by आपके पेरेंट्स ने क्या कौन सा करियर आपके लिए चूज़ किया है. आई एम श्योर आज की जो जनरेशन है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. यू नो, दे आर एटलीस्ट इवॉल्व्ड इन दैट लेवल कि हमें नहीं पता था पहले कि हम क्या करने वाले हैं, बट टुडेज जनरेशन नोज दैट कि उनको कौन सा करियर चूज़ करना है. सो आई ऑलवेज फील कि या डू वॉट वेयर योर हार्ट लाइज. And for females especially, just do what you want to do, not Right. whoever Other wants right. you to do. That's very much important. Then other things will start falling in, whether it is financial independence है आपका, या all बाकी सारी चीज़ें शायद मुझे लगता है keep following it. That two rules of taking care of yourself and आपको जो करना है वो करो. I think Right. वो दोनों चीज़ should be the fundamental thing. वेरी वेल सेड पल्लवी. बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने. सो थैंक यू सो मच पल्लवी फॉर जॉइनिंग अस. सो प्लीज़ ऑडियंस को बताओ, इफ़ एनीवन वांट्स टू रीच आउट टू यू फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वेयर दे कैन रीच आउट टू यू. To reach out to me, I would say for any kind of design support, any kind of design related query, I would be happy to help you out. You can reach out to me at krakorsystems.com. It's mentioned here. Thank you so much, Pallavi, for your lovely time. It was truly inspiring to hear your story and learn from your journey. If you enjoyed this conversation and want to hear more such powerful stories, don't forget to like, share, and subscribe to Logically Loud. And click on the bell icon for more updates. See you in the next video.